Okay. So in the last class we have discussed binary trees, right? Today we will discuss regarding the next type of tree, a little bit modification in a normal binary tree, that is binary search trees. Binary search trees or BSTs. See, the problem with binary tree is what? Simply either you will have zero child, one child, or maximum two children, right? This is what is a binary tree, that every node will have maximum two children. But the problem with binary trees, if suppose you want to search any element, suppose I've created a binary tree like this, one, okay, then two, then three, then suppose four comes here, suppose five comes here, suppose six comes here, suppose seven comes here. Suppose this is my binary tree. Now in this binary tree, suppose I want to search where the element seven is present. How much time it will take? Any idea? If you want to search any element in the binary tree, what is the worst case time complexity? ऑर्डर ऑफ एन राइट इफ यू हैव एन नोड्स अगर सात नोड है इफ यू हैव सेवन नोड्स तो हर नोड को जाके देखना पड़ सकता है मैक्सिमम वर्स्ट केस में राइट अगर इफ यू वांट टू सी दिस सेवन पहले इसको चेक करेंगे सेवन से मैच करेंगे नहीं हुआ देन वी विल चेक दिस वन देन वी विल चेक दिस वन देन दिस ऐसे करके जाना पड़ेगा सो इफ यू हैव एन नोड्स इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स नो कार्तिक दैट इज योर इन ऑर्डर ट्रावर्सल वाली कॉम्प्लेक्सिटी यू आर सेइंग है ना इफ आई एम जस्ट आस्किंग यू सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी koi element if you want to search any element in a binary tree what is the time complexity in the case it is order of n if you have n nodes it will take order of n time this is a problem with binary trees it's a huge amount of time agar itna hi time spend karna tha तो लिंक लिस्ट बना लेते नॉर्मल बाइनरी ट्री बनाने की क्या जरूरत इन लिंक लिस्ट आल्सो यू सर्च एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ n टाइम right if you are creating an advanced data structure it should provide you some benefit so we came with something known as binary search trees okay it is something like binary tree only but here we have two conditions the left of any node will be less than that and the right of any node will be greater than that this is how we will perform the insertions in a binary search tree with examples it will be a lot clear so what I want to say is if suppose I have written 10 here 10 is this node so left child or left subtree of 10 will be less than that not left subtree left child of 10 will be less than that and right child of 10 will be greater than that मतलब यहाँ पे 20 नहीं आ सकता लेफ्ट चाइल्ड में it have to be less than 10 and in binary search tree our assumption is that all the nodes are distinct कोई same node नहीं है suppose दो बार 10 I want to insert 10 two times then it doesn't make any sense right so binary search tree nodes are not repeated but suppose you want to consider this case also that I have two similar nodes in my binary search tree then the left side can be less than or equal to so this second 10 can come here let's see example it will be clear what I want to say suppose I want to insert 50 15 62 5 20 58 91 3 8 37 60 24 suppose I want to insert all these nodes in my binary search tree let's start doing it so the first node will be the root node 50 is my root node now everything or the left child of 50 will be less than that and or less than or equal to that and right child of 50 will be greater than that the next node is 15 15 50 से बड़ा है या it is less है so 15 will come on the left hand side of 50 15 आएगा यहाँ पे then the next is 62 you again start from the root node से check करना शुरू करोगे then you will follow the flow so 62 you will check with the root node 62 is greater than 50
Yeah, I'm audible. Okay. Just gets visible. Yeah. So next is 62. 62 is greater than 50, so it will come here. Now see carefully. Next is 5. You will start from the root node. 5 is less than 50, so you will come in this direction. 5 is greater than or less than 15. 5 is less than 15 also. So this is how insertion will be done by tree. Next element is 20. Again start from the root node. 20 is less than 50, I come here. But 20 is greater than 15, so I will go here. Any doubts? Till now, any doubts? Next, 58. Again start from the root node. 58 is greater than 50, I will come in this direction, but 58 is less than 62. So 58 will become the left child of 68, like this. Next is 91. 91 is greater than 50, I come here. 91 is greater than 62 also. So 91 becomes the right child of 62. Next is 3. 3 is less than 50, I come here. 3 is less than 15, I come here. 3 is less than 5 also. So 3 will become the left child of 5. Next is 8. 8 is less than 50, say 8 is less than 50, 8 is less than 15, but 8 is greater than 5. So 8 will become the right child of 5. So you have to start from the root node and then you have to keep on following that path. जहां पे भी वो insertion हो पाए. Next is 37. 37 is less than 50, but 37 is greater than 15, and 37 is greater than 20 also. So 37 will come as the right child of 20. Next is 60. 60 is greater than 50. 60 is less than 62. 60 is greater than 58. So 60 will come here. The last is 24. 24 is less than 15. 24 is greater than 15. 24 is greater than 20. 24 is less than 37. So 24 will come here. Any doubts? This is your binary search tree. The benefit of binary search tree is that in maximum cases, I'm saying, not all the cases, in maximum cases, it will give you this time of order of log n, because this is getting divided into two halves. Log n इसलिए क्योंकि इस ट्री की हाइट log n है. The height of a binary search tree is log n. तो सर्च करने में maximum time you can is log n, but in maximum cases I'm saying. अभी worst case की बात करेंगे इसमें भी. Yeah? Okay, we'll talk about that later. Now can I say that the smallest element, सबसे छोटा element जो होगा in your binary search tree, that will be at the extreme left end, सबसे left में होगा और कहीं नहीं हो सकता. And one very special property of binary search tree is that if you find the in order traversal of this, in order, remember, root will be in between. या फिर जब दूसरी बार element दिख रहा है, you have to print it then. If you write the in order traversal of any binary search tree, how you can say that this is the right binary search tree I have created in the exam? कैसे clear हो सकता है? If you write the in order traversal of that tree, you should get every node in the ascending order. That is the beauty of this binary search tree. You write the in order traversal of this whole tree, you should get everything in the ascending order. में प्रिंट करना है. तो यहां से चलो पहले फर्स्ट यहाँ पे जस्ट पुट नोट्स हियर, डमी नोड हियर, डमी नोड हियर, डमी नोड हियर, डमी नोड हियर, डमी हियर, डमी नोड हियर. ये स्टार्ट मूविंग और सेकंड टाइम में प्रिंट करना है. सो 3 फर्स्ट टाइम, 3 सेकंड टाइम. तो पहले 3 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, देन 15, देन 20, देन 24, देन 37, देन 50, then 60, then 58, then 62, then 91. You'll get everything in ascending order if you write the in order traversal. Got it? Got it? Suppose I give you a question.
rest everything remains the same. जैसे in order traversal पढ़ा है, post order, pre order, everything remains the same. Same algorithm works in binary search trees also. Okay, but suppose I give you something like this. I give you post order traversal search tree, that it is 10, 9, 23, 22. This is a gate question. 27, 25, 25, 50, 50, 95, 60, 40, 29. Suppose I give you post order traversal of a binary search tree like this. एक binary search tree को when we did the post order traversal, I got the nodes in this sequence. Can you tell me what will be its in order traversal? क्या होगा in order traversal? Can you find it out? Ascending order, right? Because we have seen that this is a property of a binary search tree, that your in order traversal gives you nodes in ascending order. So बस इसको ascending order में sort करना है. So 9, 10, 15 or जो भी है, I can't read my own handwriting. So whatever it is, okay, you just sort it down in ascending order. You will get the in order traversal. Can you tell me now the pre-order traversal? अब सेम काम करना है which we have done earlier. ये हमने पहले किया है ना, that if you have post order, if you have in order, तो फिर ट्री कैसे बनाते हैं? रिमेंबर हाउ यू कैन क्रिएट द ट्री? सेम काम करना है. इन पोस्ट ऑर्डर, कैन आई से 29 इज माई रूट? कैन आई से 29 इज माई रूट? बिकॉज दिस इज पोस्ट ऑर्डर. सो 29 इज योर रूट. अब इन ऑर्डर में देखो 29 कहां पे आ रहा है. उसके लेफ्ट में जो है, दैट विल बी द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 29, लेफ्ट सब ट्री ऑफ 29. 29 के राइट में वॉट एवर इज देयर, दैट विल बी द राइट सब ट्री ऑफ 29. दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन द ट्री. रिमेंबर इन द लास्ट क्लास, है ना? अब इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे. वी विल मेक द होल ट्री. जब पूरा ट्री बन जाएगा तो प्री ऑर्डर निकाल लेंगे ट्री से. गॉट इट? सेम ऑल द एल्गोरिथम्स. इन ऑर्डर दिया, प्री ऑर्डर दिया, पोस्ट निकालना है. सेम काम करना है. ट्री बनाओ, फिर पोस्ट ऑर्डर लिख दो. अब एक बार ट्री बन गया तो यू कैन राइट द प्री ऑर्डर, राइट? जो पहली बार दिख रहा है वही है. Means you have to write the elements in the first row. So this was regarding binary search trees. Now, insertion binary search trees, we have seen that left child is less than or equal to, right child is greater than. Suppose I want to delete an element from a binary tree, binary search tree. I want to delete element from binary search tree. Suppose I have a binary search tree like this: 20, 15, 30. Every subtree of a binary search tree will also be a binary search tree. मतलब suppose मैं बताता हूँ after this example. 2, the right child is 12, 17 का left child is 16, 17 का right child is 19, 30 का left child is 25, 30 का right child is 40, 25 का right child is 27. Suppose I have a binary search tree like this. I am saying that every subtree of this binary search tree is also a binary search tree. Subtree मतलब you take this subtree. क्या ये खुद में एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं है? दिस इज रूट नोड, उससे लेफ्ट में छोटा है, उससे राइट में वी हैव ग्रेटर. यू टेक दिस सब ट्री. 30 के लेफ्ट में 25, 27, they are less than 30. 30 के राइट में we have greater than 30. So every subtree of a binary search tree is also a binary search tree. Fine. Now suppose I have binary search tree. I want to delete an element from a binary search tree. अब इसमें दो टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं. First can be your leaf nodes. 2, 12, 16, 19, 27, 40. These are your leaf nodes. So one, either you want to delete a leaf node or you want to delete a non-leaf. नोड सिवा एलिमेंट्स बच गए वो. अब नॉन लीफ नोड में भी दो टाइप के नोड्स हो सकते हैं. फर्स्ट, जिनके एक चाइल्ड है खाली, और सेकंड, हैविंग टू चिल्ड्रन. यस और नो? दीज आर द थ्री केसेस व्हिच आई हैव टू टैकल. वी हैव टू टैकल. either you want to delete a leaf node or you want to delete a non leaf node, जिसमें भी दो टाइप हो सकते हैं. either that non leaf node is like 25, जिसका एक चाइल्ड है, that is 27, or that non leaf node can be like 20, जिसके दो चाइल्ड है, 15 and 30. Let me refresh. Wait.
Now it's fine. Is the screen visible? Yes, sir. Oh. I'm saying that if you want to delete any element or any node from the binary search tree, you can have three cases. First case is either you want to delete any leaf node, means like 2, 12, 16, 19, ये सब delete करना है. Second case, you want to delete a non-leaf node. उसमें भी फिर दो केस हो सकते हैं. Either you want to delete a non-leaf node having one child, or you want to delete a non-leaf node having two children. For example, if you want to delete 25, this is a non-leaf node having one child. You want to delete 30, this is a non-leaf node having two children, 25 and 40. So let's see both of the cases one by one. If the voice lags again, just tell me. Okay, there is some internet issue today. I'll refresh it. So the first case is suppose I want to delete a leaf node. अब leaf node को delete करने में you don't have to do anything special. Suppose I say you delete 40. Suppose 40 delete करना है. 40 is a leaf node. So just delete it. उसमें और कुछ नहीं करना है. Leaf node को सीधे यहाँ से उड़ा दो. It's perfectly fine. Suppose I say delete 27. तो 27 को डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर दो. You don't have to do anything else. Okay? लीफ नोड में बस यही है. नेक्स्ट केस, सपोज यू वांट टू डिलीट नॉन लीफ नोड्स. अब ध्यान से देखो, नॉन लीफ नोड भी सबसे पहले लेट्स टैकल द इशू व्हेन यू वांट टू डिलीट नॉन लीफ नोड्स हैविंग वन चाइल्ड. फॉर एग्जांपल, आई से यू डिलीट 25. I want to delete this 25. I want to delete this 25. Okay? Voice is fine? Everyone? There was again some internet issue. Just wait. Fine, everyone. Table and screen is visible. Now it is visible. Okay. So leaf node वाला समझ गए सब लोग? Everyone understood? What leaf nodes? Okay. For non-leaf nodes, let's consider this case that suppose you want to delete this 5. Non-leaf node में भी जिसका एक child, for example 25. I want to delete 25. If you want to delete 25, you cannot directly remove it because then whatever is below 25 that will also be deleted, right? 27 भी चला जाएगा साथ में. या 27 के नीचे भी if there was a subtree that would also have been deleted. So you cannot just directly remove 25. You have to take care of its child. So what we will do, we will attach child to the grandparents. Okay, if you want to delete 25, you attach the child of 25 to the grandparent of or to the parent of 25. ठीक है, मतलब child को उसके दादा के पास छोड़ के जाना है simply. So if you want to delete this 25, you can definitely do it, but you have to take care of 27. अब 27 30 का left बनेगा या right? 27 will be left to 30 or right? Left child, because we have seen this left. So 7 will become the left child of 30. Now the next case, suppose I want to delete a non-leaf node having two children. अब बहुत ध्यान से देखो उसको. Two children. For example, I say you delete 15. Delete this 15. I want to delete this 15. अब अगर if you were having only one child of 15, उसको ले जाके सीधे 20 के साथ attach कर देते. We have seen this right now, right? If you were having only one child of 15, चाहे 10 होता या 17 होता, उसको ले जाके सीधे 20 के साथ attach कर देते, right? But here you are having two children. अब क्या करें? Now you can do two things in this case. You can do two things.
First says, am I audible clearly, everyone? Yeah. So the first way you can do is you go, listen to me very carefully. You go on the right subtree of 15. You go to the right subtree of 15 and replace 15 with the least there. With the least element there. ऐसा क्यों कर रहे हैं? Least element there. मतलब you go on the right hand side of 15. Right hand side of 15 is this 17, 16, 19. This is the right subtree of 15. इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट उठाओ. Pick the smallest element. कौन सा smallest element है? 16. You pick 16 and you replace 15 with 16. You replace 15 with 16. तो 15 यहां आ जाएगा. 16 will come here. ओके 15 यहां नहीं आ जाएगा, मतलब 15 डायरेक्टली डिलीट ही हो जाएगा. यू डायरेक्टली डिलीट 15 and replace that with 16. We have done this because even after doing this, the left subtree will remain intact and the right subtree will remain intact. क्योंकि देखो लॉजिकल सी बात है. This is just get the intuition what has happened. If this is 15, this 16 is known as your in order successor of 15. मतलब अगर मैं इसका in order traversal लिखूंगा, so 15 के just above 16 ही आएगा. Yes or no? If I write the in order successor, after 15, 16 will come only. Right? So what we are going to do is we are going to replace 15 with its in order successor. उससे ये होगा that अगर यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, obviously 16 will be greater than this left subtree. 16 लेफ्ट वाले से तो बड़ा ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि 16 इस तरफ है और इस तरफ 16 सबसे छोटा था. So whatever is remaining now on the right hand side, that will always be greater than 16. Just get the common. This is just a common thing. Nothing technical here. अगर मैं right side, obviously this right side is greater than this left subtree. उस राइट साइड में भी जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको मैं रूट बना रहा हूं. सो लेफ्ट साइड से तो वो बड़ा ही होगा और राइट साइड से वो छोटा था ही. गेटिंग इट? लेफ्ट साइड से तो वो बड़ा होगा ही और राइट साइड में वो सबसे छोटा था ही. सो इट विल नॉट हैम्पर माई binary search tree. This is what I'm saying. So I will replace this 15 with 15 here. उससे my binary search tree will remain intact. लेफ्ट साइड अभी भी छोटा है, राइट साइड बड़ा था ही. क्लियर? फर्स्ट वे. Clear, everyone? First way. Now, the second way is you go on the left subtree. फिर से पूरा ट्री बना लेते हैं. Here I was having 15. Here I was having 16. Second way says you go to the left subtree and you pick or replace with the greatest element. जो अभी क्या उसका उल्टा. Replace greatest element. मतलब go in this left tree 10, 2 और 12 और उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट उठाओ. That is 12. So you replace 15 with 12. Like this. अब उससे भी अगेन द सेम लॉजिक. लेफ्ट वाले में वो सबसे बड़ा है तो लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स वो बड़ा ही होगा और क्योंकि लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स वर लेस देन द राइट एलिमेंट्स, यू आर गेटिंग इट इज हैपनिंग. या तो राइट साइड में जाओ और उससे सबसे छोटा उठा के रिप्लेस कर दो या तो लेफ्ट साइड में जाओ और उससे सबसे बड़ा उठा के रिप्लेस कर दो. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. These two are the ways in which you can delete any non-leaf node from a binary search tree having two children. Any doubts? You got this intuition, na? What has happened here? Clear? Yes, clear everyone? Any doubts? Now the internet is fine. It should be clear.
Fine. So this was deletion and insertion in binary search trees. That's it. इतना ही समझना काफी है बाइनरी सर्च ट्रीज में. क्लियर एवरीवन? ऑल अदर्स समझ आ गया सबको? Okay. Now again there is a problem in binary search tree. The problem is you try to create binary search tree for these nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Try to create binary tree for these nodes in this sequence. This will be created something like this. 1 will be my root node, 2 is greater than 1, 2 will come here. Third, then 3. 3 is greater than 1, 3 is greater than 2, it will come here. 4 is greater than 1, greater than 2, greater than 3, it will come here. 5, 6, and so on. Right? Like this, the binary search tree will be created. Here is the problem. If you create a binary search tree like this, what is the height of this tree? The height of this tree is not log n. What is the height of this tree? The height of this tree is n. सीधे जा रहे हैं ना? This is like a linked list. This is like a linked list. Nothing, just a linked list. The height of this tree is n. So that search time to search any element in this kind of binary search tree is order of n. Definitely 90% of the cases binary search tree gives you the best searching time, that is order of log n. वो देगा. Its property. It is. But in such cases, like in this case, I'm getting a skewed tree. This is known as a skewed tree. मतलब एक ही डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है खाली. So this is nothing but a simple linked list only. तो लिंक लिस्ट ही बना लेते, बाइनरी सर्च ट्री क्यों बनाना है? Right? In this case, skewed वाले examples में the binary search tree will again give you the time complexity of order of n. And this problem has occurred because this binary tree was not balanced. This binary tree is not balanced. Balanced binary tree पढ़ा है ना? Height of left subtree minus height of right subtree, something like that, right? This binary tree is not balanced. It is only growing in one direction. This is the problem with binary search trees. Okay, that they are not balanced. So इसी के लिए to solve this problem, फिर से one new data structure is created that is known as balanced binary search trees. Balanced binary search trees. Balanced binary search trees के ही examples हैं AVL trees, red black trees, two trees, और भी होते हैं 10 तरह के. ये सारे अभी नहीं पढ़ोगे. These are advanced level data structures you will read in your future classes. In our syllabus we have AVL trees. Okay, so AVL trees are kind of, AVL is they are the name of 3 scientists who have discovered this. So AVL trees is the next topic. बहुत ध्यान से इसको देखना. This is your balanced binary search tree because this will always give you the height of this tree will always be log n. इसमें binary tree जैसा exception नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें. इट एलिमिनेट्स दैट. सो द हाइट ऑफ दिस एवियल ट्री विल ऑलवेज बी log n. सो अगर हाइट log n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ log n होगी हमेशा. यस और नो? Got it? What I've told till now. What is the problem with binary search tree and why we need a balanced binary search tree? So till now we have seen binary trees. Binary trees में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लगनी ही लगनी है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. Then we have seen binary search trees. Binary search trees in 90% cases give you time complexity of order of log n, but there is a worst case also, that skewed tree जो एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, वो आपको ऑर्डर ऑफ n टाइम भी दे सकता है. Then comes balanced binary trees और AVL trees which always give you the time complexity of order of log n, क्योंकि इसमें हाइट हमेशा ऑर्डर ऑफ log n ही होती है. अब ये AVL trees क्या है and what is this balancing? In AVL trees we will calculate something known as balance factor for every node. अब इसको बहुत ध्यान से देखना AVL trees, है ना? Just pay attention to AVL trees. You have to calculate something known as balance factor. Balance factor is simply height of left subtree minus height of right subtree. And only -1, 0 and 1 is allowed. इसके सिवा कोई भी वैल्यू हुई, any other value, you have to balance it. मतलब अगर suppose balance factor of any nodes come out to be -2, tree is unbalanced, you have to balance it. Suppose the balance factor of any nodes comes out to be 2, again that tree is unbalanced, you have to balance it. So only -1, 0 and 1 is allowed. Okay, now let's see with example, it will be clear.
Suppose I have a binary tree like this 1, 2, 3. Let's calculate the balance factor for every node first. What is the balance factor for 2? Height of left subtree minus height of right subtree. 0. What is the balance factor of 3? What is the balance factor of 3? 0. Left subtree minus right subtree. What is the balance factor for 1? Height of left subtree 1, height of right subtree 1, 1 minus 1, 0. So this is a perfectly balanced binary search tree. यहाँ पे कोई भी unbalancing नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया. Next, अब यहाँ से start taking the nodes. The first one, suppose I create a binary tree like this. Suppose this is not binary tree, binary search tree. Binary tree का advanced version is binary search tree. Binary search tree का advanced version is this ABL trees. Suppose I create a ABL tree like this. पहले तो ये बताओ, is this a correct ABL tree? ये कोई दिक्कत है? Unbalancing बाद में देखेंगे. Is this a correct ABL tree? This is not a correct ABL tree because ABL tree binary search tree से बना है ना. और अगर ये binary search tree है तो 1 के left में should be less than 1 only. 2 के left में should be less than 2 only. Yes or no? ABL tree is created from binary search tree only. So this have to be a binary search tree first. और binary search tree बोलता है कि root node के left में should be less than that. So 1 के left में सिर्फ less वाला आ सकता था, 2 के left में सिर्फ less वाला आ सकता था. So this is not a correct ABL tree because this is not a correct binary search tree in the first place. This can be a binary search tree. 3, 2 and 1, right? This is a binary search tree. 3 के left में उससे छोटा, 1 के left में उससे छोटा, right? Now let's calculate the balance factor of every node. What is the balance factor of 1? Height of left subtree minus height of right subtree कितना है? 0. What is the balance factor for 2? Height of left subtree 1, height of right subtree कुछ नहीं है तो 1 minus 0, 1. What is the balance factor for 3? 2. Height of left subtree is 2, height of right subtree is 0, so 2 minus 0 is 2. There is unbalancing. 2 is not allowed. So this tree is unbalanced. किस टाइप की अनबैलेंसिंग है? नाउ लिसन केयरफुली. किस टाइप की अनबैलेंसिंग है? वी हैव 4 काइंड ऑफ अनबैलेंसिंग. ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट किस टाइप की अनबैलेंसिंग है, सो फ्रॉम द रूट नोड यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट अनबैलेंस्ड नोड. सो रूट नोड से मूव करना स्टार्ट करेंगे. सो रूट से आई मूव लेफ्ट, अगेन आई मूव लेफ्ट. लिसन टू मी केयरफुली. इफ यू वांट टू फाइंड आउट which kind of unbalancing you have 4 types of unbalancing in ABL trees. उन्हीं को बैलेंस करना होता है. आफ्टर एवरी इंसर्शन, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में क्या था, इंसर्शन करते गए, वी केप्ट ऑन डूइंग इंसर्शन कि लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा, लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा, ऐसे सिंपल था. बट इन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री और इन एवीएल ट्रीज, आफ्टर एवरी इंसर्शन तो बाइनरी सर्च ट्री जैसा ही होगा, बट आफ्टर एवरी इंसर्शन वी हैव टू मेक श्योर दैट द बैलेंस फैक्टर रिमेन्स इंटैक्ट. अगर इंसर्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ मैंने 1 इंसर्ट किया होता, जब तक 2 था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना. Till the time I was having only 2 nodes, there was no issue. Suppose I inserted one new node also in this binary search tree. So 1 insert करना है मुझे. So 1 is less than 3, 1 is less than 2, 1 will come here. Now after every insertion you have to check the balance factor. फिर से balance factor निकालना है पूरे ट्री का. वहां से, not पूरे ट्री का, एटलीस्ट वहां से लेकर रूट नोड तक का, क्योंकि दिक्कत इसी में आएगी. So इसका बैलेंस फैक्टर निकाला 0, इसका बैलेंस फैक्टर निकाला 1, इसका बैलेंस फैक्टर निकाला 2. देयर इज अ अनबैलेंसिंग. नाउ किस टाइप के अनबैलेंसिंग है वो पता करने के लिए रूट नोड से वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द न्यूली इंसर्टेड नोड. न्यूली इंसर्टेड नोड 1 था, सो फ्रॉम रूट नोड आई विल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स न्यूली इंसर्टेड नोड. तो कैसे मूव कर रहा हूं? पहले मैं लेफ्ट में मूव कर रहा हूं, फिर मैं लेफ्ट में मूव कर रहा हूं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लेफ्ट लेफ्ट अनबैलेंस. To solve this left left unbalance, we have to rotate this tree clockwise, keeping the middle element as a rotation point, keeping 2 at center, keeping 2 at center. मतलब 2 को पकड़ो और इसको रोटेट कर दो क्लॉकवाइज, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. 2 will be your center. 2 को पकड़ के रोटेट करना है, तो 3 will come here and 1 will be here. Got it? This is a kind of intuition. Okay, with intuitions you will get it a lot easier. लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है, 2 को पकड़ो और इसको रोटेट कर दो, इसको नीचे रोटेट कर दो, लाइक दिस. दिस विल कम बिलो.
नाउ ट्राई टू फाइंड द बैलेंस फैक्टर। और फर्स्ट तो देखो बैलेंस बैलेंस सॉरी बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। सो 2 के लेफ्ट में उससे छोटा, 2 के राइट में ग्रेटर देन दैट। नाउ कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर। 1 का बैलेंस फैक्टर 0, 3 का बैलेंस फैक्टर 0, 2 का बैलेंस फैक्टर 1 - 1 0। नाउ दिस इज बैलेंस बाइनरी ट्री। समझ आया सबको? नेक्स्ट नेक्स्ट suppose I have a binary search tree like this. 1 is here. I want to insert 2. 2 is here. Suppose I want to insert next element, that is 3. So 3 is greater than 1, 3 is greater than 2. So 3 will come here. Now after every insertion, you have to calculate the balance factor. So balance factor of this node is 0. Balance factor of this node is 0 minus 1, that is -1. Balance factor of this node is left subtree की height 0, right subtree की height 2. 0 minus 2 minus 2. There is an imbalance. -2 is not allowed. Now what kind of imbalance is there? You have to move from root to the newly added node. तो root से newly added node तक जाना है तो right right. Okay, so this is a kind of right imbalance. तो अभी जो किया था उसका उल्टा करेंगे. We will rotate anti-clockwise. We will rotate anti-clockwise, keeping 2 at center. So now this tree will become something like this. 2 को पकड़ के इसको नीचे ले आएंगे. 1 will become the left child. Yes. So 2 will be here, 1 will become the left child, and 3 will remain here. It is बैलेंस फैक्टर सारे नोड्स का 0 आएगा. जरूरी नहीं है बैलेंस फैक्टर हर नोड का आफ्टर बैलेंसिंग 0 ही आए. हो सकता है 0 आए, -1 आए, 1 आए. एवरीथिंग इज अलाउड. सो दिस इज योर राइट इम्बैलेंस. 2 को पकड़ना है सेंटर में और 1 को नीचे ले आना है. क्लियर? अब थोड़े से 2 इंटरेस्टिंग केसेस हैं लास्ट के, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना? जस्ट पे अटेंशन हियर, फोकस. थर्ड, सपोज आई हैव अ बाइनरी ट्री लाइक दिस. 1 1 का राइट में आई हैव 3. ये इनिशियल केस है. आई वांट टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट, दैट इज 2. अब 2 कहां इंसर्ट होगा? 2 इज ग्रेटर देन 1, आई विल कम हियर. 2 इज लेस देन 3, so I will come here. Yes or no? 2 will be inserted into binary search tree like this. Now after every insertion, we will see a lot of example in ABL trees, don't worry. But after every insertion, you have to calculate the balance factor. Balance factor of 2 is 0. Balance factor of 3, 1. Balance factor of 1, 2 या -2? -2, है ना? Height of left subtree is 0, height of right subtree is 2, so -2. There is a imbalance. अब imbalance क्या है? What kind of imbalance? You have to travel from the root node to the newly inserted node. So root node से I travel right, then I travel left. So this is a kind of right left imbalance. राइट लेफ्ट इम्बैलेंस हो, और अभी लास्ट टाइप ऑफ इम्बैलेंसिंग वी विल सी, दैट विल बी लेफ्ट राइट इम्बैलेंस. इन दोनों ही केसेस में वी हैव टू रोटेट दिस ट्री 2 टाइम्स. 2 बार रोटेशन करना होता है. फर्स्ट टाइम यू हैव टू रोटेट दिस ट्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कैसे रोटेट करना है? अब एक्चुअली हाथ से दिखाना इट वुड हैव बीन वेरी इजी, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रोटेट इट लाइक दिस. आई एम गोइंग टू रोटेट 2 लाइक दिस. 1 को वहीं रखेंगे, 2 और 3 को रोटेट कर देंगे. मतलब 1 विल बी देयर इटसेल्फ, 2 यहां आ जाएगा और 3 यहां आ जाएगा. दिस इज हाउ द रोटेशन विल बी. इसको ऐसे घुमा देंगे, वी विल जस्ट रोटेट इट. इसको यहां पकड़ेंगे, 2 को रोटेट कर देंगे. 3 2 का राइट चाइल्ड बन जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा. गॉट इट? सो अब अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी इम्बैलेंसिंग खत्म नहीं हुई है, बट नाउ इट बिकेम राइट राइट इम्बैलेंस. और राइट राइट इम्बैलेंस सॉल्व करना आपको आता है. क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 1 को, राइट? अभी देखा हमने. 2 को सेंटर में रख के 1 will become the left child and 3 will be the right child. Now the imbalancing will be solved. तो ये ट्री फाइनली ऐसे बनेगा. Okay, with examples it will be clear. Just be patient right now. Fine. Fourth and the last kind of imbalance. Suppose I have a binary tree like this, 3 1, and I inserted a new node 2. Because of inserting this new node 2, this tree became imbalanced.
दिख ही रहा है, 3 का 2 है, द बैलेंस फैक्टर फॉर 3 is 2, so this is a imbalance. There is a imbalance. What kind of imbalance is there? You have to travel from the root node to the newly inserted node. So left, then right. So left right imbalance is there. Again, whenever there is right left imbalance or left right imbalance, you have to rotate the tree 2 times. इस केस में क्या करना है? I have to rotate it anti clockwise first. 2 को पकड़ना है and I have to rotate it here, ताकि 1 2 का लेफ्ट साइड बन जाएगा और 2 बीच में आ जाएगा. सो द ट्री विल बिकम समथिंग लाइक दिस. 3 ऐसे घुमा देना है हाथ से पकड़ के, जस्ट रोटेट इट. सो 2 विल कम हियर और 2 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 1. नाउ दिस बिकेम लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस. लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस आपको दूर करना आता है. 2 को सेंटर में पकड़ो, 3 को नीचे ले आओ. सो 2 विल बी द सेंटर, 1 will be the left child, 3 will be the right child. See, whatever you are doing, after every rotation, basic should remain the same. हर रोटेशन के बाद बाइनरी सर्च ट्री रहना ही चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नोड ऊपर चला गया जिसका लेफ्ट में उससे बड़ा आ गया. यू कैन नॉट डू दैट. इवन आफ्टर रोटेटिंग इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री. 3 के लेफ्ट में उससे छोटा, 2 के लेफ्ट में उससे छोटा. इवन आफ्टर रोटेटिंग इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री. 2 के लेफ्ट में उससे छोटा, 2 के राइट में उससे बड़ा. So whatever rotations you are doing, that is why I'm telling you, this is not an algorithm. This is just intuition. You will get with practice. Okay, not too many tough questions you are going to get because this is your first semester only, because this is a topic of your GATE syllabus. Okay, there you will get a lot complicated programs. Right now you should just know the basics. What is the ABL tree? Why we are going to use this? What is the benefit of this ABL tree over a normal binary search tree? Okay, how we do the rotation, what kind of imbalances are there, छोटे से examples. That's it. ओके, विद इंट्यूशन यू विल गेट इट. ये कोई ऐसा फिक्स एल्गोरिथम नहीं है कि आपको याद करना है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. ऐसा होगा ही, यही ऑप्शन ही है. क्योंकि इसके सिवा और कोई भी रोटेशन करोगे तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन खराब हो जाएगी. गेटिंग इट? सो दीज आर द 4 काइंड ऑफ imbalances. अब बहुत थ्योरेटिकल स्टफ हो गया. लेट्स जस्ट सी वन बिग एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू विल अंडरस्टैंड. अभी तक किसी को कोई डाउट है? You have a class after this? Because this example will take 10 minutes at least. Okay, then we'll discuss it tomorrow. You can leave. Thank you.